Mumbai police have claimed to have foiled a major tragedy by arresting a man allegedly involved in a plan to target people participating in Muharram procession in the city. According to the police officials, the accused was allegedly preparing to distribute capsules containing zinc phosphide, a highly toxic substance that is commonly used as rat poison among participants of the religious gathering. Authorities said that the plan, if executed, could have put thousands of lives at serious risk. Police said that the accused have been identified as Fayaz Premji, a resident of Viman Nagar in Pune who runs a paint business and is a BBA graduate. He had reportedly been staying in Mumbai's Dongri area for the past few weeks, and during the preliminary investigation, officials have found that he had travelled to Iran and Iraq in 2025, and the purpose of those visits is currently under verification. The case came to light during a Muharram procession in Mumbai's area where police noticed a man allegedly distributing capsules that were initially believed to be medicine. Some individuals who consumed the capsules reportedly fell ill, experiencing symptoms such as vomiting and discomfort. Following this, police detained the suspect for questioning, and during interrogation, police recovered identity documents including Aadhaar and passport details from the accused. A subsequent search led to the seizure of nearly 14,900 capsules allegedly filled with zinc phosphide. Officials have further revealed that the accused had allegedly ordered around 50 kgs of zinc phosphide and intended to fill each capsule with approximately 1 gram of the poisonous substance. Investigators also believe that the plan was to distribute nearly 30,000 capsules among people attending the procession, which saw an estimated gathering of around 30,000 participants. DCP Central Region Zone 1 Jayant Meena stated that timely police action prevented a major incident. He said that information was received during the procession about a man distributing capsules, following which a police team intervened and took swift action. Officials have also confirmed that one individual identified as Salman Sayyed had fallen ill after consuming one of the capsules, which further raised suspicion and triggered deeper investigation. Police have also alleged that the accused admitted during questioning that the capsules contain poison intended for distribution during the religious gathering. However, investigators are still examining the full motive behind the alleged conspiracy and whether more individuals were involved. Authorities are also probing all the possible angles, including the source of the chemical and the logistics behind the large-scale procurement. Officials have further stated that the accused had been operating under the claim that he was distributing painkillers without any permission. However, the recovery of a large quantity of capsules and toxic substances led police to conclude that there may have been a more serious intent behind the act. The Mumbai police have described the case as a significant breakthrough in preventing a potential large-scale tragedy. The investigation remains ongoing, and further questioning of the accused is underway in order to determine the complete scope and motive of the alleged plan. Authorities have assured that strict action will be taken based on the findings of the probe. कल रात को भाईतला पुलिस स्टेशन की हद में मुहर्रम का प्रोसेशन चल रहा था। उस दरमियान पुलिस के पथक को, मुंबई पुलिस के पथक को एक संशयित व्यक्ति दिखा जो कि कैप्सूल बेच रहा था। संशय आने पर मुंबई पुलिस के पथक ने उससे पूछताछ करी और उसके पास से कैप्सूल्स का जो साठा था उसको जब्त किया, और साथ ही में विदाउट परमिशन वो ये बेच रहा था। इसके लिए उसकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर इत्यादि ये भी मुंबई पुलिस ने उससे प्राप्त करी। उसके बाद सुबह 4 बजे भाईतला पुलिस स्टेशन को एक एमएलसी प्राप्त हुई जिसमें सलमान सैयद नाम के व्यक्ति की तबीयत खराब होने की वजह से एक एमएलसी आई और उसको उल्टी और पेट में तीव्र दर्द इसकी शिकायत थी। संशय तुरंत जो रात में व्यक्ति ध्यान में आया था उस पर गया और इमीडिएटली पुलिस की टीम ने उसके मोबाइल नंबर और बाकी सब डिटेल्स के तहत पे तांत्रिक जांच करके उसे उसके रहने के ठिकान से उठाया। तो उसके बाद उसने कबूली दी कि उसने इस प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए और साथ ही में लोगों को हानि पहुंचाने के लिए टोटल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन, और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था, और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने
इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया और वहाँ पे बहाना बनाया कि ये कैप्सूल पेन किलर की तरह काम करती है और प्रोसेशन में जाने वाले लोगों को ऐसा फंसा के उसने कैप्सूल बेचने की कोशिश करी। परंतु मुंबई पुलिस की सतर्कता और होशियारी और मेहनत की वजह से ये बड़ा हादसा टला है और एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को हानि हो सकती थी, एक मुख्य त्रासदी हो सकती थी। ये त्रासदी को टाला गया है। जांच अभी चालू है, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है और इसका मोटिव क्या था वो अभी क्लियर नहीं है, परंतु एक बात क्लियर है कि इसने बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को टारगेट करने के लिए जिंक फॉस्फाइड जैसा पॉइजनस सब्सटेंस एक कैप्सूल में डाल के और एक फेक स्टोरी तैयार करके कि वो पेन रिलीफ के लिए बेच रहा है या फिर पेन रिलीफ के लिए लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी एक उसने फेक स्टोरी तैयार करी और वहाँ पे उसने ऐसे लोगों को टारगेट किया। That's all for now. Stay tuned to the Savera for more updates. Do like, comment and subscribe to the channel.